और चाहूंगा अब मैं विवेक वाणी के लिए नितिन जी तिलहेकर को बुलाना चाहूंगा और वो विवेक वाणी की शुरुआत करें। नितिन जी। नमस्कार सर्वांना। नमस्कार सर। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मैं कहूंगा कि तुम में से प्रत्येक का भविष्य उज्जवल है। अपने आप पर अगाध अटूट विश्वास रखो, वैसा ही विश्वास जैसा मैं बाल्यकाल में अपने ऊपर रखता था और जिसे मैं अब कार्यान्वित कर रहा हूँ। तुम में से प्रत्येक अपने आप पर विश्वास रखो, यह विश्वास रखो कि प्रत्येक की आत्मा में अनंत शक्ति विद्यमान है। तभी तुम सारे भारतवर्ष को पुनरुज्जीवित कर सकोगे। स्वामी विवेकानंद। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया हम सबको इन बारे में। अब मैं विशाल जी को बुलाना चाहूंगा कि वो हमारे आज के चीफ गेस्ट का इंट्रोडक्शन करें। विशाल जी, ओवर टू यू। थैंक यू अभिषेक। नमस्कार, मेरा नाम विशाल नगरकर है। इस साल के युवा दिवस के हमारे चीफ गेस्ट है प्रोफेसर कमलाकर इंदुलकर सर। प्रोफेसर इंदुलकर जी के पास मास्टर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ एजुकेशन, मास्टर ऑफ एजुकेशन, मास्टर ऑफ सोशल वर्क आदि से कुल मिला के 15 से ज्यादा डिग्रियां हैं। प्रोफेसर इंदुलकर झुंझुनवाला कॉलेज के बायोलॉजी प्रोफेसर हैं और साथ ही साथ विवेकानंदा केंद्र के एक्टिविस्ट भी हैं। इंदुलकर सर ने टीचिंग अपना प्रोफेशन स्वामी जी के दो शब्द से प्रभावित होकर लिया, बी एंड मेक। इंदुलकर सर पिछले कई सालों से झुंझुनवाला कॉलेज में बायोलॉजी सिखाते हैं और उन्होंने दूसरे कॉलेजेस में भी फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, केमिस्ट्री, मैथ्स आदि जैसे विषय भी पढ़ाए हैं। सर ने इतने सालों में बहुत सारे रिसर्च भी किए हैं, जैसे कि क्रिटिकल स्टडी ऑफ महाराष्ट्र स्टेट ह्यूमन राइट्स, रोल ऑफ एनजीओ इन अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित्स, स्टडी ऑफ योगा एंड मेडिटेशन और आदि। इंदुलकर सर ने अपने करियर में काफी कविताएं और किताबें भी लिखी हैं, जो इंग्लिश, हिंदी और मराठी भाषा में उपलब्ध है। सर ने काफी नेशनल और यूनिवर्सिटी स्तर पर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग, पीएचडी ओरिएंटेशन प्रोग्राम, हेल्थ एंड हाइजीन, बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया आदि इससे 50 से ज्यादा विषय पर सेमिनार में भी भाग लिया है। प्रोफेसर इंदुलकर जी काफी कविता लेखन, निबंध लेखन में स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और इंटर कॉलेज स्तर पर पहला पद भी हासिल किया है। प्रोफेसर इंदुलकर जी डिस्ट्रिक्ट में काफी बार जज रह चुके हैं। उन्होंने अपने टीचिंग करियर में 70 से भी ज्यादा इवेंट्स में अपने बच्चों को अपनी शिक्षा दी है। प्रोफेसर इंदुलकर जी स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, मेंबर ऑफ स्टूडेंट काउंसिल ऑफ यूनिवर्सिटी, जनरल सेक्रेटरी ऑफ स्टूडेंट काउंसिल जैसे आदि उपलब्धियां भी हासिल की है। ये इनके बारे में बहुत कम जानकारियां हैं। ये इससे ज्यादा मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, पर 1 घंटा कम पड़ेगा, इसलिए आई हैंड ओवर टू यू अभिषेक। थैंक यू। Thank you, Vishal. It is an honor to have such a resource person with us today. कमलाकर इंदुलकर जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जिस भी क्षेत्र में गए वहां पे अपना झंडा गाड़ा है। और ऐसे लोगों का होना और उनकी बातें सुनना ही एक अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होती है। इसलिए अब मैं प्रोफेसर कमलाकर इंदुलकर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और हम सबको गाइड करें, आज मार्गदर्शन दें हम सबको। धन्यवाद अभिषेक। धन्यवाद सर। अ, स्वामी विवेकानंद जी का एक वाक्य है, गिव मी हंड्रेड्स ऑफ नचिकेतास एंड आई शैल सी इन द वर्ल्ड। तो आज के अपने मीटिंग में 85 तो है लोग, ओके। सो hundreds of Nachiketas means those people, those who have willingness to win. So from where we can bring or we can make such kind of people? How to make Nachikets and at what age Nachikets can be available? So basically, Nachiket is, as I said, willingness to win, and the one who carries the fighting spirit. Okay, the one who is ready to struggle, always ready to struggle, and struggling for winning. Okay, so that attitude of winner's attitude, what we say. Okay, with that attitude, the person is. So who can be Nachiket? Obviously, Nachiket is the one who is youth. Okay, so how we can define youth? Yes, can any one of you tell me who is youth? How we can define youth? युवा की परिभाषा क्या है? You can unmute and you can answer. Anyone?
तो यूथ एक ऐसा एज होता है जहाँ पे सबके पास विलिंगनेस रहती है कुछ भी करने की, और हम लोग फिजिकली और मेंटली इतने हेल्दी होते हैं कि हम लोग जो सोच सके वो करने की क्षमता भी रखते हैं। सही है अभिषेक, आपने जो कहा कि यूथ एट यूथ फेज वी आर एट द पीक ऑफ एनर्जी। तो एक शायर कहता है कि जो चट्टानों से टकराता है उसे तूफान कहते हैं, जो चट्टानों से टकराता है उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफानों से टकराता है उसे युवान कहते हैं। तो युवा कौन है कि जिसने मतलब हर एक अवस्था की अपनी अपनी विशेषताएं रहती है, और हमें मालूम है कि मनुष्य जीवन में 3 अवस्थाएं रहती है, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। तो बाल्यावस्था की विशेषता क्या है कि बच्चा जो है ना वो रोता रहता है और मांगता रहता है कि मुझे ये चाहिए, और वो नहीं मिला तो वो रोता है ना। और वृद्धावस्था की विशेषता क्या है कि वृद्धावस्था चिंता करते रहते हैं। जब आप अगर देखेंगे बुजुर्ग लोग अपने आसपास तो चिंता करते रहते हैं कि कल क्या होगा, कैसे होगा। तो युवा अवस्था के लक्षण क्या है? तो युवा वो है जिसके जीवन से मांगना, रोना और चिंता निकल गई है, वो युवा है। तो अगर इस परिभाषा में देखें तो हमें कितने युवक दिखेंगे अपने आजू बाजू, क्योंकि अगर खाली हम उम्र की बात करें तो हम देखते हैं कि जस्ट ग्रेजुएट हुआ है फिर भी मतलब मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं, मुझे सही लाइफ पार्टनर मिलेगा कि नहीं, चिंता में लगा है, रो रहा है, मांग रहा है कोई मुझे जॉब दो, नौकरी दो, जो भी है। तो युवा वो है कि जिसके जीवन से चिंता, रोना और मांगना निकल गया है, एंड द वन हु इज रेडी टू फाइट, रेडी टू स्ट्रगल। युवा वो है जो अस्वस्थ है, अस्वस्थ इसके लिए कुछ बनाना चाहता है, कुछ बनाना चाहता है, ओके, कुछ करना चाहता है। युवा वो है जो अस्वस्थ है। और अगर हम दुनिया का इतिहास देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज रिटन बाय यूथ, ओके। द all records in the history of the world is of youth. Okay. So whether it is construction or destruction, youth has to play main, or youth has played main role. Okay. So how to channelize this youth of 21st century? Okay, where he has to face many problems. Okay, so there are different challenges. Okay, at different level. Okay, at personal level, at family level, social level, environmental level. Can any one of you mention few of the challenges which you realize the challenges of 21st century? Yes, any one of you. Competition, mental health. Very good. Yes, the world today is full of competition, and obviously it is affecting, psychological health. Good. Yes. Anyone else? सोसाइटी का प्रेशर, जैसे कि अगर आप कोई नया एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो सोसाइटी उसे प्रेशराइज करती है कि नहीं, पढ़ाई करो, डोंट बी अ ड्रॉप आउट, पढ़ाई Yes. में Yes. जीवन रखा है, बिजनेस इज नथिंग। Yes. Yes. So pressure of peer group pressure or society pressure or family pressure. Yes. Right. Distraction. Hmm. Good. Distraction. Okay. Lots of Unemployment. unemployment is the challenge. Yes. Anything else? Please unmute yourself and keep on saying whatever challenges you realize or you feel. बिगेस्ट चैलेंज इज द अनचेंजिंग थॉट्स ऑफ अ सोसाइटी। सोसाइटी मॉडर्न हो गया बट थॉट्स अभी भी पुराने ही हैं। Yes, yes, yes. Thinking process or the thought process of the society. Okay. Mindset of the society. Specifically negative mindset, we can see. Okay. Yes. Anything else? Unequality. Inequality. Okay. Good. Okay. Politics, corruption. Okay. Corruption, politics. Sir, keeping Addictions. oneself away from social media. Oneself away from society. Okay. Okay. Social Keeping self. media. Social media. Okay. Okay. Social media. Okay. Okay. Social media is a problem. Okay. Fine. Isolating oneself from social media is very tough. It is a challenge. Okay. Good. Okay. Anything else? Addictions.
Okay, addictions, lot of drug addiction, alcohol, smoking, different types of addiction. Addiction of social media also is a new addiction. Okay, yes. Poverty. What? Poverty. Poverty is okay. Fine. So anyway, there are different kinds of challenges, as you have many of you have rightly mentioned. Okay, at individual level and at family level. But the main challenge of present situation, if you see the present scenario around, is uncertainty. Okay, nothing is certain. You can see around us past 2 3 years, whatever we are experiencing. The major significant feature of this century has become is uncertainty. Okay. You don't know what can happen tomorrow, and therefore, because of this uncertainty, as you have rightly mentioned, some of you, that there is a problem of psychological health, and it is nothing but phobia of death. Okay, fear of death, which we can see in everyone's eyes nowadays. So how to face these challenges? Okay, and who can solve these problems? Or we are just going to keep on adding in to this problem, or we are going to see the solutions for the problem? Where we'll get the solutions for the problem? So if we'll analyze these challenges, and if you want to find out the solution, then at every phase, see, in the course of time, every time in every period there were different challenges. Okay, every century there were different challenges. In every period of time, there were different issues and problems which human society has to face. Okay, but they have faced it, they have solved this problem, and who had played key role in doing this is no one else but youth. So as far as these challenges which you are mentioning now, who can solve these challenges? Who can be the part of solution? That is nothing but youth. Okay. But when youth can solve these challenges, when youth will get this ability, when he'll realize that youths are not useless. Many a time youths are stamped, okay, that hopeless, useless, they are this generation. Every generation, every previous generation keeps on blaming next generation. In generation now is hopeless, useless. But we have to realize, and youth also has to realize, that they are not useless. They are useless. Okay. So how we can use our potential, how we can use our energy in the right direction, as Abhishek has mentioned, that channelizing the direction of youth can solve the problem. How we can channelize this energy? Okay, youth energy. Now, for channelizing this energy, we need a right kind of ideal in front of us. And though I'm talking about relevance of Swami Vivekanand for 21st century, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका काम, जिनके विचार कालातीत होते हैं, समय अपनी मर्यादा में उनको बांध नहीं सका। स्वामी जी के विचार ऐसे ही हैं। लेकिन 21st सेंचुरी में वो ज्यादा एप्लीकेबल है, क्योंकि इतने ज्यादा प्रॉब्लम हमें दिख रहे हैं आज, जो पास्ट में कभी नहीं थे। सो अगर हम स्वामी जी के विचारों को अपनाएं, उनको समझे, सो एटलीस्ट वी कैन बी पार्ट ऑफ सोल्यूशन. One thing which Swamiji is saying, that you can make a difference when you can understand, when you will realize or you will understand that strength is life and weakness is death. So just leave all kind of weakness. Okay. Many a time we we doubt ourselves whether I am able to do this. Okay, whether I am eligible to do this. So Swamiji says that trust yourself. आस्तिकता के बारे में उन्होंने एक जगह पे कहा है कि जिनका खुद के ऊपर विश्वास नहीं है वो नास्तिक है. पुराने ग्रंथ कहते हैं कि जिनका भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है वो नास्तिक है. लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यू एजेंडा, स्वामी जी सेज दैट जिनका खुद के ऊपर विश्वास नहीं है वो नास्तिक है. तो स्ट्रेंथ इज द लाइफ. ओके, देन ही सेज इन अदर प्लेस, ही सेज दैट एक्सपांशन इज लाइफ. यू हैव टू एक्सपांड. जब आपको पता चलेगा कि मैं दुर्बल नहीं हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, ये अगर जब पता चलेगा, then we'll definitely try to expand ourselves, expand in everything, expansion in thought, expansion in our activities. Expansion is life, and he says contraction in is death. Okay, so only youth can make a difference, who believe in strength. Okay, who realize his own strength and keep correct ideal.
If the as a teacher, when we ask many places who is your hero, then a student tells name of actors or actress. Okay, actors and actress cannot be hero. Here, the term hero means who is your ideal, who can change your life. Okay, so for youth, Vivekananda is correct ideal if we try to understand his thoughts and not just understanding application of his thoughts. Okay. Now, if you see life, why his life is his birthday is celebrated as Youth Day, because he has lived life of just 39 years. Born on 12 January 1863 and died on 4 July 1902. Just life of 39 years, but he has you know uh, he, uh, he has influenced all whole world. Okay, whole world he has influenced by his thoughts and by his action. Now, difficulties, if we'll see during his life, whatever difficulty he has faced, okay, we cannot think of traveling a short journey without return ticket or without proper arrangement. Okay, but he has roamed throughout the world thrice in his lifetime, though he didn't had anything. Okay, as far as money is concerned, but just because of his willingness of doing something for his nation. Okay, that willingness, okay, that quest of knowing the things and the eagerness of serving the people, okay, that has motivated him. And he had said here that his life itself is an example. Okay, his life itself is an example. The life which he lived. Now, Abhishek, during his introduction, he said that four beautiful words which has influenced the world. Okay, my American brothers and sisters. The journey, his life journey till that point, was full of struggle. Okay, initially his childhood was very good because his father was a barrister and had good practice. He was from rich family. Okay, but suddenly after the death of father, the poverty which he has faced when he has finish his graduation. At the same time, he had the question in his mind whether God exists or not. Okay, does God exist? And he used to ask this question to everyone he come across. And he got disappointed everywhere that no one told him that, okay, he has seen the God. But one of his professor told him that, okay, I have not seen the God, but there is a person in Dakshineshwar who has seen God and you can meet him. So when he met when the Narendra met Ramakrishna Paramhans, he said, "Yes, I have seen the God and I can show you." So he keeps on visiting. Narendra keeps on visiting Ramakrishna Paramhans oftenly. Meanwhile, he completed his graduation and at the same time he lost his father. So that was very tough time for him. Okay, because he has responsibility of his brothers and sisters. They were all together 10 in number and he was elder one. Okay. And as an elder brother, he has to take responsibility of the family. So and he was in the search of job. Unemployment, as you said, that is a main challenge now. So at that time he was unemployed and was thinking how I can do something for my family. So once he approached रामकृष्ण परमहंस और उनसे उन्होंने कहा कि आप अगर देवी माँ से बात करते हो तो मेरे लिए कुछ देवी माँ से मांगो. तो रामकृष्ण जी ने कहा कि मैं क्यों मांगू, आप खुद मांगो. तो स्वामी जी गए और उन्होंने काली माता से मांगा कि मुझे ज्ञान, भक्ति और वैराग्य दे. दिस इंसिडेंस रिपीटेडली अकर्ड 3 टाइम्स. फिर इन्होंने कहा, रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि नहीं, वो तो आपका जो फैमिली का जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा, इट विल बी सॉल्व. And then Swamiji Narendra took sannyas. See, this is very tough time and tough decision. When one has responsibility of family and in such tough condition after graduation, sacrificing for the society and taking sannyas. But Swamiji took that decision and Narendra has become Vivekananda.
Then afterwards, when he traveled after the death of Ramakrishna Paramans, when he traveled throughout the India to see the condition of the India, he was very much disturbed to look poverty of the country. Okay, the way people living their life, following many superstitions, and the poverty not just in terms of money, but poverty in terms of thoughts also, the weakness which was spreaded all around due to they were missing the right kinds of thoughts. And while traveling throughout the India, he reached to the Kanyakumari. There was a rock, Kanyakumari rock, and he reached there by swimming. He didn't had money even to pay to the boat person, and he reached there by swimming. And 3 day and night he meditated there, and then there he realized what he has to do. He realized that he has to go out of India if he has to do something for India. So then when he attended this conference, okay, at Chicago, as Abhishek told, okay, he influenced by these four words, but there he told one story. एक स्टोरी उन्होंने बताई, एक मेंढक की स्टोरी. ओके, मेंढक, a frog from whale. Okay, so there was a frog from whale, and the other frog entered in the whale. He was from sea. It was from sea. So the frog from whale asked to the frog from the sea, "From where you have come?" He said, "I have come from sea." So the frog from whale asked, "How big is your sea?" So the frog from sea said, "It's too big. You cannot imagine. Okay, it's beyond your imagination." So that frog from whale jumped from one place to other and asked, "Is your sea this big?" So a frog from sea answered, "Dear friend, no, it's too vast." So frog from whale again jumped from one end of the whale to the other end of the whale and asked, "Is your sea this big?" The frog from sea replied, "No, it's too big." So frog from whale asked his friends, "Kill this frog. It is telling lie. Nothing can be bigger than this." Okay. इस कुएं से बड़ा और कुछ हो ही नहीं सकता, ये झूठ बोल रहा है. So telling this story, स्वामी जी concluded कि we are like that frog from whale. हम अपने रिलीजन के कुएं में बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि मेरा ही रिलीजन सबसे बड़ा है. When you will come out of the well of your religion and you will see the uh, religion of humanity is like a sea. Okay, so then you will realize the vastness of religion of humanity. Uh, with his thoughts and with he had given speech or at different places. He has influenced everyone. If you will see any image of Swamiji, it's so attractive. Okay, any photo, if you will come across of Swami Vivekananda, it's very attractive. So you can just imagine of his personality, how attractive his personality might be. So one young girl from a foreign country approached him, okay, saying that Swamiji, मुझे मालूम है कि आप ब्रह्मचारी है, आप सन्यासी है, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि मुझे आपके जैसा लड़का चाहिए. I want son like you. So Swamiji replied, "Why you want son like me? Consider myself as your son. मुझे ही अपना बच्चा मानो." Can you imagine the thought process of Swami? And such great people were our ancestors. Okay, so Swamiji had a great respect for women, and he said that one of his thought is the best thermometer to the progress of a nation is the treatment of its women, the way we treat our women. So एक जगह पे उनको एक ने पूछा कि आपके देश में मतलब स्त्रियों को स्पर्श क्यों नहीं करते. तो स्वामी जी ने कहा, इंग्लैंड में जब उनसे किसी ने ये पूछा तो उन्होंने कहा कि आपके कंट्री में विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया को कैन एनीवन टच टू क्वीन विक्टोरिया? They said no. So we treat our women like queen. So high respect to the woman, and
the thought that if we can upgrade the Indian woman. He has always said that tolerance and the qualities of Indian woman. So if we can change it, if we can upgrade their thing, then they can do a lot for the country. Swamiji has said that serving man is serving God, and his life, as I said, is it itself. He has led by example. Okay, he has sacrificed and he has served his nation. So whenever he was, though he was in foreign countries, at that time also he was always thinking about Mother India. Okay, there he was surrounded by all comforts. Okay, uh, the people were there to serve him, but he was restless thinking about the condition of Indian brothers and sisters. And always this thought was there in his mind that what he can do for upgradation of the country. So when he returned to India, all over, people welcome him like anything. And throughout India also, he was, inspiring people, giving speeches to the youth, okay, in motivating them. And suddenly there was one, uh, epidemic, a pandemic in Calcutta, pandemic of plague. So there were a number of people, those who were dying because of it. And Swamiji, with few of his disciples, he went there for serving them, the people, those who were suffering from plague. So throughout day and night, he was busy in serving them, cleaning them, offering them food and medicine. Uh, so his days, to a complete day, was used to be very busy in serving those people. So one of his disciple approached him and said him, स्वामी जी आप हमें कहाँ पे लेके आए हो? हम तो सन्यासी हैं. हमारी दिनचर्या कितनी अच्छी थी. हम सुबह उठ के पूजा पाठ करते थे, आपका भजन गाते थे, आपका प्रवचन सुनते थे. या आप हमें कहाँ पे लेके आए हो? ये लोगों की सेवा करना, ये सब हमारा काम नहीं है. हम तो सन्यासी हैं और मुझे तो योगी बनना है. अभी क्या करियर प्लान था उस शिष्य का? उसे तो योगी बनना था. तो एक सिंपल सेंटेंस स्वामी जी ने उसे कहा, बेटा योगी तो तू बनेगा ही. अपने शिष्य से स्वामी जी कहते हैं, बेटा योगी तो तू बनेगा ही, पहले उपयोगी तो बन. तो ये जो भाव है कि हाउ आई कैन बी यूजफुल फॉर माय फैमिली, फॉर माय सोसाइटी, that will make a difference. Okay. When we'll realize this thought, yes, see, I have to serve others. Okay. So serving man as serving God. Okay. स्वामी जी जिसे कहते हैं कि शिव भाव से जीव की पूजा, हर एक में ईश्वर देखना और हर एक की हम मीन्स वी आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू सर्विंग समवन. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ आई कैन बी यूजफुल for someone. Okay, that thought when will generate in our mind as a youth. Okay, आज तो हम जो आज हमारी एक समस्या ये भी है कि ब्रेन ड्रेन एक समस्या है हमारे यहाँ, कि यहाँ से हम फॉरेन जाते हैं और वहाँ पे ही अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं. बहुत बड़ी समस्या है यहाँ. तो स्वामी जी जो गए बाहर, तो the intelligence and the potential what we had, he would have lived a different kind of life altogether. But the sacrifice which he has made for the nation, okay, and he has he has said, he has defined love. Now this age of youth, this value is also very important, love. Okay, एंड अलग अलग परिभाषा जो सोशल मीडिया के माध्यम से और जो हम समझते हैं लव के बारे में. ओके, तो स्वामी जी हैज डिफाइंड लव इन वन वर्ड. He has said that love is nothing but sacrifice. Sacrifice is love. If you love someone, that means you are ready to sacrifice. And his love for the nation, he has he has
shown through his action, okay, through his sacrifice which he has made for the nation. And dear friends, today is the day when we have to remember his sacrifice. Okay, and we have to not just remember, we have to get inspiration from it. Okay, just information is not enough. उनको स्वामी जी ने एक जगह पे कहा है कि ज्ञानी वही है कि जो एक एक कोई भी एक सुविचार हो, एक अच्छा विचार हो जिसने अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट किया है, उसे हम ज्ञानी कहेंगे. क्योंकि अदरवाइज तो अगर बहुत सारी इंफॉर्मेशन, तो लाइब्रेरी इज आल्सो फुल ऑफ इंफॉर्मेशन. In present situation, if you'll see, computers are also loaded with information. Okay, but they are not intelligent. Intelligent is one who practice the thoughts. Okay, so the thoughts of Vivekananda, which we are trying to understand now, if we'll try to practice these thoughts, then only we can make a difference. Okay, so as he said, youth is a power, and youth is a creator of his own destiny. Okay, only youth can make the difference. Only youth can make the difference, and the phase of youthfulness can be more beautiful if we'll try to understand and implement the thoughts of Vivekananda. Okay, the positivity, any thought of your Vivekananda, you just read and you come across, you will find that his thoughts are full of positivity, full of positivity. Not a single negative statement you will come across through his writing. Okay, so and this is what is important, as we are saying, that the one biggest problem is mindset of society, negativity which we has at individual level, at family level, and at social level. Okay, that is the biggest problem and biggest challenge which we have to face, and that we can face only with positive thoughts, the thoughts which are full of energy. Swamiji says that every soul is potentially divine. His soul is potentially divine. His soul has energy to create, okay, to make difference. And this is the phase when we can do this. So on this occasion, I appeal to every one of you that try to study as much as possible about Vivekananda, and in your lifetime bring at least one thought into practice. Swamiji says that Uttishtata Jagrata Prapya Varani Bodhata. Okay. So you have to decide your goal, and you have to, keep on working. जैसे सर ने कहा, योग कर्मसु कौशलम. Give your 100% to reach your goal. Okay. And for that, you just have to change a bit, and then you will change your habit, and then your change habit will make your character. Okay. So today is the day when you can make a resolution of changing your habits. Okay, and using your energy of youthfulness for the contribution, towards nation. Okay, towards building the nation. So the value, how we can evaluate our value, our worth. Our worth we can evaluate always. World has their own parameters to evaluate us, but we can evaluate our worth by our contribution. Okay, so how we can contribute? We can contribute at greater level if we can change our thoughts. As Swamiji is saying, we are what our thoughts have made us. So to take care about what you think, words are secondary, thoughts live, they travel far. So if we take care of thoughts, and if we'll practice these thoughts of Vivekananda, we'll decide a goal of our life, that we are here to make some difference. We are here to change our world. Okay, and for changing our world, whatever change we have to see around, we have to change. We have to, see in ourselves first. So Uttishtata Jagrata Prapya Varani Bodhata, what Swamiji has said. I hope that on this occasion we'll take this resolution that these thoughts of Vivekananda I'll try to imbibe at my level, and I'll bring that into my practice. Okay. So my best wishes to all of you for doing that, and thank you for giving this opportunity to share the thoughts of Swamiji with all of you on this pious day. If any doubts you have, any question you have, your questions are welcome. Thank you, one and all. Thank you very much, Professor Kamlakar.
By listening to you, I recollect a quote of Swami Vivekananda where he said, "My name should not be made prominent. It is my idea that I want to be realized." By listening to you, it can be seen how you, at individual level and social level, and how Swami Vivekananda Kendra upholds his idea and work on it. Now, I would like to request the students present here to come up with the questions. सारे स्टूडेंट्स एक एक करके अपना सवाल पूछ सकते हैं सर से, कोई भी डाउट हो तो। सर मेरा एक क्वेश्चन था। यस प्लीज। तो आपने आपने ये एड्रेसिंग के टाइम पे कहा था कि आपको खुद पे विश्वास रहना चाहिए, बट सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि खुद पे विश्वास करे कैसे, मतलब कि हाउ शुड वी हाउ शुड वी डेवलप दैट सेल्फ बिलीफ थॉट। Very good question. No, self belief has great relation with action. तो हमें खुद के ऊपर ट्रस्ट तभी आएगा जब हम छोटी छोटे एक्शंस कर सकते हैं। छोटी छोटी एक्शंस मतलब बहुत बड़ी चीज नहीं करनी है, छोटे छोटे चीजों से ही शुरू करना है। जो हम अगर एक सपोज आपने सोचा है कि दिन में आप कुछ पढ़ के ही सोएंगे, एटलीस्ट 1 or 2 pages ऑफ बुक you will read, and whatever you have decided, when you do it, then automatically it helps in building your confidence कि जो आप सोचते हैं वो आप करते हैं। ओके तो ऐसे करने से ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस इज आउटकम ऑफ एक्शन। ओके इट विल कम जस्ट बाय प्रैक्टिस। ओके तो जो आप सोचते हैं उसको ठान लेते हैं उसको पूरा करना, और जब पूरा करेंगे उसी से कॉन्फिडेंस आएगा। बहुत बार क्या होता है हम सोचते हैं लेकिन वो करते नहीं है, और इट लीड्स टू लूजिंग कॉन्फिडेंस। ओके सो आई थिंक दिस इज द ओनली की कि आप जो सोचो वो करो तो कॉन्फिडेंस डेफिनेटली आएगा। थैंक यू। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ कर्म योगा क्या है? आपने कर्म योगा के बारे में कुछ कहा था। प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। सर व्हाट इज कर्म योगा? हाँ कर्म योगा देखो योग ये जो शब्द है ना, योग ये शब्द यूज शब्द से आया है। यूज मतलब जुड़ना। ओके तो हमारे संस्कृति ने हमें 4 लक्ष्य दिए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष मुक्ति। ओके ये सबसे बड़ा मुक्ति मतलब जुड़ जाना। ओके तो जुड़ने के अलग अलग मार्ग है ना। तो जुड़ना मतलब सुप्रीम पावर से जुड़ना, तो सुप्रीम पावर के साथ जुड़ने के अलग अलग मार्ग हमारे संस्कृति ने दिखाया है। जैसे भक्ति योग है, भक्ति के मार्ग से भी हम लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है वैसे कर्म योग है, कर्म के माध्यम से हम जुड़ सकते हैं। मतलब जो भी मेरा कर्म है वो जैसे सर ने कहा ना गिविंग योर 100%, कर्म योग मतलब कर्म के माध्यम से जुड़ना। आप जो भी कर्म कर रहे हैं ना वो कर्म आप ईश्वर की सेवा है और ईश्वर से जुड़ने के लिए कर रहे हैं। जैसे अभी मैं कुछ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ तो मेरे मन में यही भाव है कि जो मेरा कर्म मैं कर रहा हूँ मैं 100% दूं। ओके एज अ स्टूडेंट इफ यू आर गिविंग योर 100%, स्टडी करना आपका कर्म है तो उसमें आप अगर 100% दे रहे हैं तो आपका कर्मयोग हो गया। जो भी कर्म जो भी काम जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसको 100% भाव से करना, यही कर्मयोग। ठीक स्वामी जी की एक किताब है वैसे कर्मयोग, आपको अगर मिलेगी तो आप पढ़ो, बहुत मजा आएगा आपको। सर मेरे पास वो किताब है, वो बच्चों को मैं दे दूंगा। ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर आपने बताया कि आज के समय में अनसर्टेनिटी ये मेन चैलेंज है, तो हमारे सराउंडिंग में इतनी ज्यादा स्पीड से चेंजेस हो रहे हैं, तो एज ए यूथ हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब इससे हम लोग कैसे कोप कर सकते हैं? आप मतलब या आप बता सकते हैं? Yes, very good question, Disha. As I mentioned, and you also agreed, that uncertainty has become a prominent feature of 21st century. और जैसे आपने सही कहा कि अलग चेंजेस तो इतने स्पीड से हो रहे हैं कि अभी कुछ समय पहले हमें मालूम भी नहीं था कि ऐसे हम वर्चुअली कोई प्रोग्राम करेंगे, है ना।
या वर्चुअली एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। तो चेंज तो बहुत स्पीड से हो रहा है, टेक्नोलॉजी इज रैपिडली चेंजिंग, ठीक है। और उसके साथ कोप अप कैसे करना है ये भी है। अगर आप कोप अप नहीं करेंगे तो आप पीछे छूट जाएंगे, और वो स्पीड के साथ कोप अप करना है तो वो कैसे करें, ये भी एक सही सवाल। तो इस सवाल को अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें मीन्स वी शुड बी लाइक, जैसे विवेक बुद्धि है ना, विवेक बुद्धि मतलब राइट क्या है और रॉन्ग क्या है, ये डिफरेंशिएट करने की जो एबिलिटी है उसे विवेक कहते हैं। व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। तो स्पीड तो बहुत ज्यादा है, तो क्या उस स्पीड के साथ जाना जरूरी है, हमें सोचना चाहिए, ठीक है। राइट है, व्हाट इज राइट और एंड व्हाट इज रॉन्ग, ये जब हमें विवेक बुद्धि जब हम ये अपनी जागरूक करेंगे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, देन वी कैन गेट द आंसर टू व्हाट वी हैव टू कोप अप। जैसे ये स्पीड से अगर हम जाने की सोचे तो वेयर दिस स्पीड इज गोइंग टू एंड, ओके, दिस इज गोइंग टू एंड विद अ डिस्ट्रक्शन। अगर हम एनालिसिस करें सब चीजों को तो हमें पता चलेगा कि ये डिस्ट्रक्शन की तरफ ही हमें लेके जा रहा है। सो देन व्हाट आई हैव टू डू, I have to find out the way for it, or the way for satisfied or best living is minimizing the needs. Okay. जैसे हम अपनी नीड्स मिनिमाइज करेंगे देन उनसे हम आज जमाना ऐसे है कि लाइफ एंड ऑल, ओके। So eco-friendly doesn't mean that just ideal of paper you are worshipping, that is not eco-friendly, or paper bag, use of paper bag. Eco-friendly means minimizing your needs. Okay. और एक चीज हमें दिशा समझ के लेनी चाहिए, मतलब with pertaining to your question I am telling you that what are our needs, basic needs, और जो भी हमारी नीड्स है ना, और नेचर में जो भी हम प्रोग्रेस करते हैं, वी नीड टू प्रोग्रेस, ओके। तो अगर हम प्रोग्रेस के बारे में सोचे तो प्रोग्रेस इज लाइक स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अगर आप मतलब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देंगे तो अगर स्ट्रेट लाइन में वो ग्राफ आता है ना, प्रोग्रेस का, वेदर इट इज एट इंडिविजुअल लेवल, फैमिली लेवल और इंस्टीट्यूट लेवल। जैसे आपका अगर ये महीने में सैलरी 5 लाख है ये साल में, तो नेक्स्ट ईयर अगर 8 लाख हुआ तो आपका ग्रोथ हुआ है ना। ऐसे ही पूरा कंट्री का ग्रोथ भी हम ऐसे ही मेजर करते हैं। तो ये ग्रोथ के लिए जो भी रॉ मटेरियल है ना, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम नेचर, ओके, एंड नेचर इज लिमिटेड, ओके। उसका एक स्ट्रेट लाइन है ऐसे, ओके, सीधा। So we cannot cross that. When we'll realize that, and then we'll see to it that our needs has to be minimized. तो जब हम minimize need करेंगे अपने आप को, then only we will be in true sense will be in nature, with nature, and then what conflict you are feeling or realizing कि how to cope up, तो आपको पता चलेगा कि कोप अप आपको टेक्नोलॉजी के स्पीड के साथ नहीं करना है, कोप अप हमें नेचर के साथ करना है, एनवायरमेंट के साथ करना है। ओके दिशा, थैंक यू हेलो, सर। और एक सवाल था सर, हाँ बोलो बेटा। कि वही अनसर्टेनिटीज इतनी ज्यादा है सराउंडिंग में, चेंजेस इतने हो रहे हैं, तो एज अ यूथ हमें सिर्फ मतलब जो करियर वाइज हम लोग गोल रखते हैं वो कैसे रखना है, वो एक ही कैसे रखें, मतलब उसके बारे में हम कैसे सोचे कि हमें यही गोल रखना चाहिए। हाँ सही है। करियर तो एक बात है, हर एक का करियर तो अपने अपने लाइकिंग और इंडिया एंड कॉन्कर द वर्ल्ड विथ योर स्पिरिचुअलिटी, ओके। तो जो स्टेबिलिटी है ना बेटा, वो स्टेबिलिटी थोड़ा थॉट से आएगी। जितना अपना थॉट्स कॉन्क्रीट रहेगा, दैट थॉट्स विल गिव यू दैट स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, ओके। स्टेबिलिटी फॉर एक्शन विच इज रिक्वायर्ड, वो थॉट से आएगी। सो बेसिकली गेटिंग गुड और पॉजिटिव थॉट्स एंड गेटिंग एक्वेंटेड विथ सच थॉट्स इज एसेंशियल। बाकी करियर जो है ना, आज करियर्स के एन नंबर ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल, but if you just want to make your career, then one thing you have to learn, that is keep on learning every time and everywhere. Lifelong learning is the only key to good career. आप ऐसे सोचेंगे कि आज मैंने एक फैकल्टी में मैंने मेरा ग्रेजुएशन कर लिया एंड दैट विल हेल्प मी फॉर बिल्डिंग माय करियर, सो इट इज रॉन्ग इन प्रेजेंट डे, okay. And in uncertainty,
what is the solution? Uncertainty, the only solution is trusting yourself. Okay, you have to trust yourself that you can do it. Okay, and that trust in self only will give you strength to fight against all this uncertainty which we are seeing around. Okay, Disha. थैंक यू सर. वेलकम बेटा. ऐसा मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था हाँ बोलो अभिषेक. सर. अगर दो क्वेश्चन है बट इंटरकनेक्टिंग है तो एक साथ हाँ, पूछ रहा हूँ सर. हाँ, अगर स्वामी विवेकानंद जी 21st सेंचुरी में आज होते तो क्या उनका पोटेंशियल ज्यादा अच्छे तरीके से यूज हो पाता? और आप यूथ को पॉलिटिक्स में कैसे देखते हैं? क्या यूथ को पॉलिटिक्स में एक्टिव पार्टिसिपेशन देना चाहिए फॉर डेवलपमेंट? सी अगर मैं आपको एक अपोजिट उसके बारे में ये देता हूँ. आज अगर हम देख सी टेररिज्म इज द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम, बिगेस्ट प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ वर्ल्ड. सो हु आर टेररिस्ट? दे आर यूथ. यस और नो? सो अगर यूथ इतना डिस्ट्रक्शन में एंगेज है, क्यों डिस्ट्रक्शन में एंगेज है? क्योंकि उसका पोटेंशियल कंस्ट्रक्शन में हम लोग एंगेज नहीं कर पा रहे हैं. Because we are not reaching with right thoughts to to him. Okay, so कंस्ट्रक्शन में यूथ को लाने के लिए मतलब जैसे आप पॉलिटिक्स आप बोल रहे हैं कि आज के दिन में politics has influenced everything, like all perspectives of life are influenced by political decision. So it is obviously it is important and youth only has to play a key role even in politics. लेकिन स्वामी जी जैसे कहते हैं कि फॉर इंडिया पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स इज नॉट अ वे फॉर अपलिफ्टमेंट. जैसे हर एक अपने देश का हर एक कंट्री का अपना एक स्वभाव रहता है. जैसे आप ब्रिटेन में जाओ तो ब्रिटेन में शायद आपको पॉलिटिक्स से अपलिफ्टमेंट हो सकता है, या फ्रेंच में जाओ तो फ्रेंच में बिजनेस थ्रू अपलिफ्टमेंट हो सकता है. तो यहाँ पे इंडिया में स्पिरिचुअलिटी इज द वे ऑफ अपलिफ्टमेंट. ओके, still as you said that youth also has to play key role in, and see it's not all everything is going wrong. As in the beginning it was told that our prime minister is addressing one online meeting, youth festival. So there are people to whom we can follow, okay, in politics also. So it is not that everything is wrong, but youth has to play a key role in politics also. Okay. और दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? एक पॉलिटिक्स के बारे में था. अगर स्वामी विवेकानंद जी 21st सेंचुरी में आज होते तो क्या उनका पोटेंशियल? हाँ, यस यस, गुड क्वेश्चन. स्वामी जी ने एट द टाइम ऑफ हिज डेथ ही हैज सेड कि there has to be other Swami Vivekanand to realize what work is done by Vivekanand. Okay, उनकी जो कार्य की सीमा है, डेप्थ है, वो समझने के लिए दूसरे विवेकानंद की जरूरत है. अभी स्वामी विवेकानंद जी 21st सेंचुरी में होने चाहिए थे क्या? तो वो है. in terms of his thoughts he is there with us, and as he has said, हमने एक स्लाइड में देखा कि thoughts travel at longer distance. So his thoughts are always with us. His thoughts has motivated during his time and after him also to millions of youths. Okay, so for transformation, you can act like Vivekanand, Abhishek. Okay, why we should wait that Vivekanand will come again? Because already he has given everything, whatever he has to give to the world. Okay, now it's our turn. Okay, it's our turn that we have to imbibe the energy from it and we have to spread it around. Okay, thank you, Abhishek. I hope I have satisfied your question. Yes, sir. Yes, sure. It was an honor listening to you, sir. Now I would request Disha from second Epicom to give vote of thanks. थैंक यू अभिषेक. प्रणाम माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय प्रधानाध्यापक, सभी प्राचार्य, विद्यार्थी मित्रों और मेरे टीम के प्रिय सदस्यों. अब हम स्वामी जी की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में राष्ट्र निर्माण हेतु आयोजित किए गए इस यादगार अवसर के अंत तक आ चुके हैं. मैं दिशा विवेक ठाकुर, संत गोंसालो गार्सिया महाविद्यालय वसई की तरफ से यहाँ उपस्थित सभी को धन्यवाद प्रस्ताव देना चाहती हूँ. विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी और उनकी वसई शाखा के मान्यवर नितिन तिल्हेरकर
सर और उनके सभी सहायक कार्यकर्ताओं को संत गोंसालो गार्सिया महाविद्यालय में राष्ट्रीय युवा दिवस समारोह 2022 आयोजन हेतु विशेष आभार। अपने भारत के हर कोने में राष्ट्र निर्माण हेतु निस्वार्थ भावना से कार्य करने वाले आपके सभी कार्यकर्ताओं के प्रति विशेष कृतज्ञता व्यक्त करना चाहती हूँ। साथ ही मैं आपके सुवर्ण महोत्सवी 50 साल के सफलतापूर्वक सफर के हेतु मनपूर्वक बधाइयां। हमारे विशेष अतिथि माननीय प्राध्यापक कमलाकर इंदुलकर जी, जिन्होंने इस परियोजना में अपने ज्ञान से हमें प्रभावित किया और स्वामी जी के प्रति प्रेरित किया, मैं आपके प्रति विशेष कृतज्ञता व्यक्त करना चाहती हूँ। आपने हमें हाउ टू चैनलाइज यूथ एनर्जी ऑफ 21st सेंचुरी के बारे में बताया और पर्सनली मैं आपने जो बताया कि लर्निंग फ्रॉम एवरी मोमेंट एंड ट्रस्टिंग योरसेल्फ, मैं खुद अपने जीवन में फॉलो करना चाहूंगी। साथ ही में मैं आदरणीय प्रधानाध्यापक सोमनाथ विभूते सर, इनकी आभारी हूँ जिन्होंने इस अद्भुत परियोजना को पूरा करने का अवसर मुझे और मेरे टीम को दिया और हमें इस परियोजना का नेतृत्व करने हेतु प्रोत्साहित किया। माननीय प्राध्यापिका इवान साखरानी, आपके सहायक सहभाग के लिए धन्यवाद। और प्राध्यापक रामदास तोंडे सर, आपके इस परियोजना के संगठन हेतु हमारी टीम की सहायता के लिए आभार। इस परियोजना के संगठन हेतु हमारी टीम की सहायता के लिए आभार। उपस्थित सारे गुरुजन और विद्यार्थियों को धन्यवाद कहती हूँ। आप सभी की मदद से यह परियोजना सफल हुई। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जिन लोगों की सहायता हुई है, मैं उन सभी लोगों को आभार कहती हूँ। और अगर किसी को मेरा आभार पसंद नहीं आया या फिर कोई आभार योग्य रह गया हो, तो मैं दिलगिरी व्यक्त करना चाहूंगी। आशा करती हूँ कि इस परियोजना का हेतु साकार हो जाए। अंत में मैं कुछ कविता की लाइंस कहना चाहूंगी, जिस कविता ने मुझे प्रभावित किया था। विजय तन की घड़ी भर की दमक है, इसी संसार तक उसकी चमक है। भुवन की जीत मिट्टी है भुवन में, उसे क्या खोजना गिरकर पतन में। शरण केवल उजागर धर्म होगा, सहारा अंत में सत्कर्म होगा। जय हिंद, जय मां भारती। थैंक यू। Thank you, Disha, for golden words.